an image that is going to remain embedded in our minds. This is coming from the direction of Rashtrapati Bhavan, the Chakra formation, and the Mi-35 attack helicopters are taking off from Hindon Air Base, and that's where they've come from. Look at the coordination. The Mi-35, a highly maneuverable attack helicopter formation, is flying at a speed of 240 kilometers per hour and is led by Group Captain Suresh Kumar Tiwari. The other two captains are Wing Commander Adarsh Kumar and Squadron Leader Dishtiman. हेलीकॉप्टर्स की चक्र फॉर्मेशन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां राजपथ से गुजरते हुए जबरदस्त उत्साह रोमांच यहां दर्शकों में। ये परिवहन विमान है जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। So traditionally, flypasts also serve as an aerial salute, and they show respect, display aircraft, showcase flying skills and delight the public, and we can see all of that today. In the words of a pilot, the thunder becomes felt in the heart and not in the head. और निगाहें एक बार फिर आकाश की ओर। कुछ ही देर में यहां से हर्क्यूलिस फॉर्मेशन में विमान गुजरेंगे, जिनमें 3 C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान विक्ट्री आकृति के साथ हर्क्यूलिस फॉर्मेशन में विमान से 350 किलोमीटर की रफ्तार के साथ फॉर्मेशन की कमान का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थुला गोपी मोहन। अन्य विमानों में विंग कमांडर सबम लेनिन सिंह और विंग कमांडर एम चहल। इन विमानों ने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। The light cloudy sky and the diffuse sunlight giving a totally different character to the flypast, and a beautiful one at that. Vanishing into the blue, the Hercules formation. It is through flypast that ceremonial and national pride also imprint themselves on a nation's memory. And the next formation is that of the Netra, which is also the eye in the sky. It is an airborne early warning and control system aircraft with state-of-the-art early warning radar and a number of advanced electronic warfare equipment, all indigenously designed and developed by the DRDO. And here we have, this aircraft is being flown by senior test pilots, Group Captain Badrish Atharya and Group Captain Pradeep Batra. नेत्र यानी आकाश में आंख। और अब C-17 ग्लोब मास्टर, जिसने हिंडन से उड़ान भरी है, और सुखोई जो जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचे हैं, अभी कुछ ही देर में यहां से ग्लोब फॉर्मेशन में गुजरेंगे। C-17 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई 30 विमान ग्लोब फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन तुलसी रुक्मणी रवि संभाल रहे हैं। Su-30 विमानों की कमान विंग कमांडर प्रीतम संतरा और स्क्वाड्रन लीडर रोशन महतो के हाथ, और इनकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे की। So excitement galore at the Republic Day parade here. There is speed, there is excitement, pulse racing, daring, and there is of course precision. And all thanks to these magnificent men in their flying machines. For these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to just be an extension of them as they take wing and vanish into the blue. जनसमूह में बहुत उत्साह और रोमांच की भावना, सभी निगाहें आकाश की ओर। हालांकि आकाश में बादल हैं, लेकिन हवाई जहाज
यहां से गुजर रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग फॉर्मेशन में। Designed, developed and manufactured in India. Ladies and gentlemen, presenting to you Tejas, the मुख्य अतिथि आज के गणतंत्र दिवस समारोह का आनंद लेते हुए। And all eyes up in the sky for the next formation, which is going to be the Tejas formation in Vic formation of the LCA aircraft at a height of 300 meters, speed of 780 kilometers per hour. Led by Group Captain Madhav Rangachari, and flying in formation were Wing Commander S. Dhankar and Wing Commander S. Roy. तेजस 780 किलोमीटर की रफ्तार से यहां से गुजरे और अब जैगुआर फॉर्मेशन में 5 जैगुआर विमान एरोहट फॉर्मेशन में निकलेंगे, जिन्होंने नाल एयरबेस से, जो कि बीकानेर के निकट है, वहां से उड़ान भरी है। ग्रुप कैप्टन डी कुकरेती इस फॉर्मेशन की कमान संभालेंगे। विंग कमांडर पारिजात सौरभ, विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह, विंग कमांडर एडमान और विंग कमांडर एन हुडा अन्य विमानों में। So we have birds in the air and we have our birds in the air, and of course over here all eyes in the air. Following the Jaguar we'll have the Fulcrum. These are 5 MiG-29 upgrade air superiority fighters, and they are flying in a formation, have been recently upgraded and have become extremely potent air-to-air as well as air-to-ground weapon platforms. Led by Group Captain Vikashsheel Singh Saini. The other members were Wing Commander Sandeep Banerjee, Wing Commander C. Suresh, Wing Commander Parijat Jha and Squadron Leader Nitin Nagarkoti. दर्शकों में इतना उत्साह है कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर इस पूरे दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। पलक झपकने में ही विमान निकल न जाए, इसके लिए उनकी नजर लगातार आकाश की ओर। और अब 3 सुखोई 30 MKI विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए ग्रुप कैप्टन मनीष चंद के नेतृत्व में हमारे ऊपर से तीनों विमान अलग अलग दिशाओं में विमुख होकर त्रिशूल की रचना करते हुए विंग कमांडर नितिन कुमार वत्स और विंग कमांडर सुमित गर्ग अन्य विमानों में। What heart-stopping moments. And well, if you've been holding your breath so long, please don't let go right now, because coming up is the culmination of the parade.